आदमी जब अपने डोले वोले दिखाते हैं और गाड़ियां प्रोजेक्ट करते हैं और अपनी हाँ। लड़कियां घुमाते हैं और नोटों की गड्डियां घुमाते हैं, तब वो हीरो हो जाते हैं, सुपरस्टार बन जाते हैं वो। क्या, और मुझे पता लगा मैं मम्मी बनी हूँ, आई वाज लाइक हाँ हाँ ठीक है, मैं कर लूंगी, मेरे को बस रिया कपूर की पिक्चर करनी है, बस रिया कपूर और सोनम के साथ हैंग आउट करना है। अगर आप सड़क पे किसी आदमी को, एक दूसरे आदमी को या औरत को पीटते देखो, शायद लोग इतनी डंडे ना उठाएं as much as they might do when they see two people making out. Welcome, content creator and actor Shibani Bedi. How are you, Shibani? I'm well, Onam. How are you? How are things with I'm you? good. I'm good. Nice. So, or I should say thank you for coming. Thank you for having me. Thank you for having me. Have you seen the film? No, I haven't, but I got to know a bit about the film, so we'll have that conversation. So, Shivani, लोगों को लगता है कि ये आपकी डेब्यू फिल्म है. Hmm. But I think if I'm not wrong, your first film was in 2015 about called Tau Jaga. So, It was in 2004 called Tau Jhagadu, but we okay. will pretend like we don't know about it because it was a terrible movie. I was very young. It was basically a Okay. गुजर फिल्म, वो रीजनल फिल्म थी, और सब अपनी पिक्चरों को बहुत बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, एंड देन यू समटाइम्स रीच ऑन सेट एंड यू रियलाइज ये क्या मजाक हो गया है मेरे साथ, सो वो पिक्चर मेरी लाइफ का एक बड़ा खूबसूरत मजाक था, बट अच्छा है, मतलब इट वाज अ फन एक्सपीरियंस. Shibani, so talking about, thank you for coming. Um, I would just say that a kind of response is getting everywhere. So I would say it's a kind of mix. So are you happy with the reaction, or you somehow expected something more? आई एम लार्जली हैप्पी ओनली ओनम. आई फील लाइक काफी जगहों पे जो रिव्यूज में जो एक शिकायत जो बहुत रिव्यूअर्स ने करी है कि ना, बाकी कैरेक्टर्स को ज्यादा फ्लैश आउट नहीं करा, उनके बारे में, उनकी कहानियों के बारे में ज्यादा दिखाया नहीं, और वो मेनली शायद इसलिए हुआ बिकॉज पिक्चर 1 घंटा 47 मिनट की है. उसमें आप कितनी, और इसमें इतने सारे कैरेक्टर्स हैं और हर कैरेक्टर इंटरेस्टिंग है, हर कैरेक्टर की कहानी है जो वो लेकर आते हैं टेबल पे. सो हाउ मेनी कैरेक्टर्स कैन यू डेल्व इनटू द लाइव्स ऑफ. But overall, apart from maybe that aspect of the reviews that have had people wanting more of the people they saw on screen, बाकी सब काफी पॉजिटिव है. मैं खुद भी एक दो बारी छुप छुप के स्क्रीनिंग्स देखने गई हूँ बम्बई में, और सब हंस रहे हैं. हॉल की कैपेसिटी कल रात को 8 बजे, फ्राइडे को, जबकि फ्राइडे इज नॉट द बेस्ट डे ऑफ द वीकेंड बिकॉज ऑफिस जाते हैं लोग, छुट्टी नहीं होती उनकी, पर कल ऑलमोस्ट 80% भरा हुआ था हॉल. काफी हंसे लोग, काफी अच्छे इंटरेस्टिंग रिएक्शंस थे. और बाकी स्क्रीनिंग में भी वी हैव ऑब्जर्व दैट पीपल आर वेरी इन्वॉल्व्ड, they are paying attention, they are reacting. So I think that way audience response and critic response has been overall, I think it's been fairly positive. Yeah. So as I said कि मैंने फिल्म नहीं देखी है, but मुझे पता चला कि वो amazing in the film. And Right. of course, Thank you. I know. before signing the film, you got to know that you were working with Shehnaaz, Gill, and Bhumi Pednekar. So, Yeah. was there any thought that you might get overshadowed because of their performance, in the film? No, in the sense, यार देखो, इसमें जो एक तो शहनाज, फर्स्टली उनका कास्टिंग थोड़ा सा हमें शुरू शुरू में नहीं पता था कि वो रोल शहनाज कर रही हैं. उनका आई थिंक लॉक होने में थोड़ा सा, maybe it took about a month or 2 months after the shoot started before we got to know that Shehnaz is playing Rushi's character. But मुझे ना ऐसी कोई इनसिक्योरिटी कुछ नहीं थी, बिकॉज एक तो स्क्रिप्ट जो है बहुत ही तगड़ी स्क्रिप्ट थी, एंड स्क्रिप्ट में ऐसे कोई भी चेंजेस नहीं थे जिसकी वजह से जो बाकी कैरेक्टर्स है उनके लाइंस या सीन्स काटे गए या काटे जा रहे थे. आई फील लाइक भूमि एज एन एक्टर इज अ वेरी सिक्योर एक्टर. सो उनके साथ हमें कभी ऐसे लगा ही नहीं कि मतलब उनको हमारी परफॉर्मेंस से या हमारे सीन्स में कोई दिक्कत थी. शी वॉज वेरी इंक्लूसिव, वेरी सपोर्टिव, फुल बिग सिस्टर एनर्जी, एंड वेरी वेरी सिक्योर. एंड वो गाइड, एक्चुअली वो कभी कभी तो मुझे गाइड करती थी कि भैया कैमरे की तरफ देखो, मतलब तुम कहाँ, मुझे मत रिएक्शन दो, फुटेज खाओ. लाइक समटाइम वंस शी येल्ड एट मी, फुटेज खा. आई वाज लाइक ओके सॉरी. Yeah. Your film talks about female sexuality, and do you think as women, the society somehow makes us feel guilty
that to shed light on such issues like what women needs or what women wants. Yeah. I do, yeah, totally, Onam. I feel like not just on sexuality and sexual pleasure, but I feel like to have any needs and wants and anger and frustration as a woman and demanding more things for yourself or being selfish is not always rewarded when you're a woman. आई थिंक इस पिक्चर का ना अंडरलाइंग मैसेज कहीं ना कहीं, जो मुझे नहीं पता है बाकी लोग अग्री करते हैं कि नहीं, बट जहां से मैं ऑब्जर्व करती हूँ इस मूवी को एज अ पर्सन हु बीन अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, जिसने इसकी कहानी पढ़ी है, देखी है पिक्चर, मुझे लगता है कहीं ना कहीं व्हाट इट एड्रेसेस इज हाउ टू बी अ वुमन in a world which doesn't allow you to be a woman and have needs or demand needs or not apologize for the life that you live. बहुत सारी चीजें हमें नहीं मिलती ऑन अ प्लेटर, समटाइम्स यू हैव टू सेलिब्रेट द कार्ड्स दैट यू आर डेल्ट विद एज अपोज टू द कार्ड्स दैट यू कांट हैव, some nobody grows up thinking कि मैं सारी जिंदगी कुंवारी रहूंगी, मैं सारी जिंदगी बैड रिलेशनशिप्स में रहूंगी, मैं सारी जिंदगी मेंटल हेल्थ के समुंदर में डुबकी मारूंगी। जिंदगी कभी कभी अनफेयर होती है, तो क्या हम अब रोते रहें सारी जिंदगी? अगर एज अ वुमन मेरी जिंदगी के कुछ बॉक्सेस टिक नहीं हो पाए, तो मैं फिर क्या बालकनी से कूद जाऊं? और वाई, उससे क्या होगा? किसका फायदा है? मेरा तो फायदा नहीं है। सो माइट एज वेल सेलिब्रेट द लाइफ दैट आई हैव, एंड इफ टू लिव दैट लाइफ ऑन माई टर्म्स आई हैव टू आस्क फॉर थिंग्स एंड फाइट फॉर देम एंड मेक इट अ बिग डील, देन शुडंट दैट बी ओके? तो समवेयर ये पिक्चर सेक्सुअल नीड और प्लेजर को प्रायोरिटाइज करती है, औरतों का उसको फोकस में लाती है, बट अल्टीमेटली ना इसका गोल बेसिकली ये बताना है कि औरतें भी हैं, उनकी भी जरूरतें हैं। जितना आदमियों को कुछ चीजें चाहिए उतना औरतों को भी चाहिए, और जस्ट बिकॉज वो मांग रही हैं, उनको आप स्टेरियोटाइप या एक डब्बे में नहीं डाल सकते या राइट ऑफ नहीं कर सकते, और ये उनके लाइफ के काफी सारे और अदर एस्पेक्ट्स में भी होता है। सो लेट्स नॉर्मलाइज वुमेन being people who have needs, who want things, and who are not sorry for occupying space. So how important, for it is for mothers, to have this Hmm. conversation with their daughters, and what can be the approach, like especially when today talking about sex, which is still Hmm. taboo in our country. Hmm. Yeah. पता नहीं हो ना, बिकॉज है क्या, हम लोग ना बड़ी, हम काफी सारे लोग ना बड़े सेक्स नेगेटिव होते हैं। सेक्स को बचपन से ही ऐसा कुछ पता नहीं क्या हवा बना के प्रोजेक्ट किया जाता है, कि स्पेशली औरतों के लिए आदमियों की एंटाइटलमेंट और उनके लिए काफी सारी चीजें नॉर्मल है, कोई उनको पनिश नहीं करता। बट अगर औरतें ज्यादा सेक्सुअल हों या उनको सेक्स चाहिए या फिर वो अनअपोलोजेटिकली बोले कि हमें सेक्सुअल एक्टिविटी पसंद है, अफिनिटी है, तो बहुत गालियां और जूते पड़ती हैं। आप अगर, इट्स ट्रू, अगर आप इंटरनेट पे भी देखो या Yeah, कहीं पे भी देखो, अच्छे छोटे कपड़े पहन के अगर एक औरत अपनी सेक्सुअलिटी को ओन कर रही है, तो exactly. सब बोलेंगे या गलत गलत Yeah. बातें बोलेंगे। आदमी जब अपने डोले वोले दिखाते हैं और गाड़ियां प्रोजेक्ट करते हैं और अपनी हाँ, लड़कियां घुमाते हैं और नोटों की गड्डियां घुमाते हैं, हाँ, तब वो हीरो हो जाते हैं, yeah. सुपरस्टार बन जाते हैं वो। सो उनको ये एक्चुअली थोड़ा, दैट्स ट्रू। हाँ, उनको फेम भी यू नो फिर उस हिसाब से ज्यादा मिलता है, गर्ल्स को लाइक ज्यादा फिर एग्जैक्टली, बॉडी शेमिंग या एंड ऑल या दे हैव टू फील और इट। मतलब, और जजमेंट लड़कियों को ज्यादा मिलती है। तो कहीं ना कहीं जब हमारी मम्मियां हमें थप्पड़ मारती हैं जब हम सेक्स के बारे में बात करते हैं, वो उनको इसलिए आती है इंस्टिंक्ट, बिकॉज उनकी माओ ने भी उन्हें मारा है। क्योंकि जब भी औरतों ने अपने नीड्स और जरूरतों और प्लेजर के बारे में अपने आप को यू नो अनअपोलोजेटिकली प्रोजेक्ट किया है, उनको पनिशमेंट मिलती है। तो समवेयर प्रोटेक्टिवनेस उनकी मदर्स की मे बी किक इन हो जाती है, वेर दे डोंट वांट यू टू गेट हर्ट एट द हैंड्स ऑफ the society that we live in. I just wish, as a society in general, as a community of people, I hope the world becomes a little more sex positive. I hope in the future people don't see sex as the ultimate crime or the ultimate sin, because it's not, you know. So yeah. And you just said that about your mother, and I would just say Yeah, that you're also playing a mother in the film. yeah, So when yeah, you got to yeah. know that you will be playing a mom, so were you ready, or what was your reaction? ओनम यार देखो, मेरे लिए तो रिया कपूर की पिक्चर करना ही सबसे बड़ा रेडी था।
आई वाज लाइक मुझसे कुछ भी करा लो, मेरे को आप मम्मी बना दो, पापा भी बना दो, मैं सब बन जाऊंगी। तो आई डेंट रियली थिंक मच ऑफ इट। मुझे बहुत सारे लोगों का ये फीडबैक मिला था बाद में, आफ्टर आई स्टार्टेड शूटिंग फॉर दिस मूवी, कि ना आप स्टेरियोटाइप हो जाओगे अब आपको मम्मी के रोल मिलेंगे। तो मे बी आगे जाके वो एक डाउन साइड हो सकता है, बट आई फील लाइक इस मूवी में ये कैरेक्टर सिर्फ एक माँ ही नहीं है, बहुत सारी और चीजें भी है। मतलब परफॉर्मेंस, जो भी रोल मुझे मिला, जो भी मैंने किया है, उसके अंदर बीइंग अ मदर इज अ पार्ट ऑफ द थिंग एंड द जर्नी दैट दीज थ्री फ्रेंड्स हैव। सो आई होप देर आर अदर एस्पेक्ट्स ऑल्सो ऑफ द कैरेक्टर दैट स्टैंड आउट। बट हाँ, मतलब जब मैंने साइन किया और मुझे पता लगा मैं मम्मी बनी हूँ, आई वाज लाइक हाँ हाँ ठीक है, मैं कर लूंगी, मेरे को बस रिया कपूर की पिक्चर करनी है बस, रिया कपूर और सोनम के साथ हैंग आउट करना है। You ये पूरा कपूर clan, including Anil Kapoor. राइट, How was the राइट। experience working with them, and just tell us. It was amazing, Onam. I feel like they are a very intelligent. I mean, Ria, Karan, the director, the writers, everybody is super funny, super intelligent. And there's a lot of room for conversation and collaboration. इन्होंने जो पिक्चर भी बनाई है वो एक, you know, you have to be a certain gutsy person to be taking on a subject like this and take it to a massy audience. And then also trying to, or getting to, like, I've heard कि the returns on the movie, the slow, like जो box office returns अभी आ रहे हैं, positive लग रहे हैं, for a Friday they were good, which feels like a good win, because normally अगर, if it was not Riya or Ekta Kapoor or Anil Kapoor or Karan backing it, as producers and directors, it could have been tough. So I feel like it was amazing working with them. There's a lot of room for banter, conversation, collaboration. Riya's really funny, you know. मतलब आई विश एक दिन वो स्टैंड अप कॉमेडी ट्राई करें, वो अपनी फैमिली के ही कुछ कुछ, मतलब जो बातें बताती हैं कभी कभी, जिस तरह से वो नरेट करती है अपनी जिंदगी की Yeah. बातें, इट्स जस्ट बहुत फनी है वो। तो मुझे तो बहुत मजा आया। मैं समटाइम्स आई रियली लुक फॉरवर्ड टू हैविंग मीटिंग्स इन रियाज हाउस, बिकॉज उनके घर में खाना बहुत अच्छा मिलता है। सो मतलब उनके घर का जो Yeah. कुक्स हैं वो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। अनिल कपूर वाज फैसिनेटिंग। आई थिंक उनके साथ बंबई में तो मैं शूट, मतलब जब हम शूट कर रहे थे, आई कुडंट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज ही हिज सीन्स वर डिफरेंट। वी गॉट टू मीट हिम प्रॉपर्ली एंड चिल विद हिम इन कनाडा, एंड आई वाज लाइक अरे ये तो मेरे फैमिली के पापा, मतलब ऐसे ही हैज दिस डैड एनर्जी, Exactly. इट वाज वेरी Exactly. स्वीट। So, working with him was, sometimes get intimidating. Do you think so? Yeah, it is, but I feel like, so I didn't work with him thankfully, मेरे ना उनके साथ कोई सीन्स नहीं है, तो मैं उनके साथ in a work colleague co-actor capacity I didn't have that opportunity, that privilege. But otherwise देखो यार, I grew up watching his movies. मैं और मेरे भाई ने काफी सारी अपनी भाषा पिक्चरें देख देख के जो सीखी हैं, उनमें से बहुत सारी पिक्चर अनिल कपूर की थी। तो मेरे लिए तो वो मतलब लेजेंड है। तो वो द फैक्ट कि आई एम ब्रीदिंग द सेम एयर एज हिम इज लाइक ओह। तो मतलब मैं चपड़ चपड़ तो कर लेती हूँ, बट इंटिमिडेट तो मैं होंगी होंगी और मैं होती हूँ। बट ही, एज आई सेड, वो इतने वार्म एंड ही वाज सो इंक्लूसिव एंड ही हैड सच अ स्वीट वार्म एनर्जी, that not for a single second do you feel like you're talking to a superstar Anil Kapoor. It felt like you're talking to, you know, Uh, somebody who's looking out for you. He's a senior and he knows better and he's willing to, like, look out for you and make you feel comfortable and happy. So, that's very sweet. Now, yeah. I can actually see how much Eyes had fun while shooting the film, of course. Right, So, right. and Shibani, आपका वो एक वेस्ट दिल्ली एक्सेंट है ना, जो आपका प्रॉपर बहुत फेमस है इंस्टाग्राम पे। नहीं यार, अब तो नहीं है। नहीं है वेस्ट नो दिल्ली में अब बट मुझे, नहीं नहीं, सच्ची में नहीं है। आप कोई और But कैरेक्टर से one कंफ्यूज कर। character that is, people love the most is with you and Ankush, the Pranika या की मम्मी. या I think I might have misspelled. तो एक बार वो हमारे व्यूअर्स या के लिए कर दो ना यार, वो थोड़ा सा. अरे यार, उसके लिए ना एक मूड होता है, अभी इंटरव्यू में वैसा वाइब नहीं है। किस सिचुएशन में?
अरे प्रियंका, ये ओनम की वीडियो लगा दे। इसके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। कौन सा शैम्पू लगाती है अपने करली बाल के लिए? पूछ, तेरे बाल में भी लगा देंगे। ओनम, नारियल तेल लगाती तेरी मम्मी। उसमें राई का झोंका डालती है। झोंका कहते हैं कि झोंका कहते हैं? हमारे में तो झोंका कहते हैं। Okay. That's That's it. it. Thank you so much, Shibani. It was lovely interacting with you, and I wish Thank you you, all the best Onam. for the Thank upcoming you. ventures. And yeah, thank you so much for joining with us. Thank you. Thank you.